we are here at the Eco Garden right now, and of course, you can see at the back that 141 assistant professors को राज्य की तरह उत्तर प्रदेश में भी सेवा विस्तार दे। बिहार खंड, झारखंड एवं अन्य राज्यों ने एक्सटेंशन दिया, तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं? जितिन जी, दिनेश जी, प्लीज हेल्प अस save IITians and save NIITians. Of course, you know IIT is a very tough process to get in, and of course, when you get in the IITs, and after that, the second college is the NIT. So NIT and the IITs are the most lucrative one, and you have studied from. Yes, I have done my MTech from NIT Patna in the year 2017. Okay. Yes. So after that, how was your journey, and how Yes, you? Actually, first of all, I am thankful to you and your team that you are covering our story, our news. Actually, in December 2017, there was a vacancy by the central government of India. That means Ministry of Education India, that there is a TechCube 3 project, Technical Education Quality Improvement Program. This project was started in the year 2017, and its aim was to improve the quality of technical education. And this project has been implemented in all the states of India. So now in December 2017, there was a vacancy for the post of assistant professors, and the central government recruited 1554 assistant professors, those who studied from IITs and NITs, and we were placed at the different engineering colleges, government engineering colleges of these 12 low-income states. And there was an MOU signed between state government and central government, and in that MOU, it was clearly mentioned that state governments have to prepare a sustainability plan for these assistant professors. That means the project was for the period of 3 years, and since if you are improving the quality of education, so quality of education means it is not for some fixed period of time. If you are improving the quality, that means you will have to improve the quality for lifetime. So lifetime means for first 3 years, central government will give the fund. After 3 years, state governments had to give the fund. Now this project has been terminated by the central government in 30th September 2021. After that, central government they written the letter to all the states that you have to sustain the assistant professors recruited under TechCube 3 project. Now, Bihar, Jharkhand, Uttarakhand, Rajasthan, Chhattisgarh, these states have already given the extension to the assistant professors. We are also called TechCube faculties because we all have been recruited under TechCube 3 project. But Uttar Pradesh is the only state they are not going to give us any extension. Our job has been, we have been terminated from the college on 30th September, and after that we have many communications with the Technical Education Minister Shri Jitin Prasad ji, but till now we have not been given extension. Okay, 30th September, which year? 2021. Okay, Yes. just 2 months back. The biggest investment a country is making is the investment on the youth. Okay, so you have studied from IIT and IITs, various lucrative and well-named professional institutes. Yes. You are here. What is your age, gentlemen, right now? 28 years old. 28 years Yes, old. yes. So there will be many expectations from your families also. Of course. When I joined NIT Patna, so at that time my family members were expecting that, of course, this my son will, of course, join some of the colleges to teach the students. And when I joined the engineering colleges, Rajkiya Engineering College, Bijnor, on the post of assistant professors, so at that time really there was a big celebration in my family. But right now when I have lost the job, so I think you can also imagine what my families are thinking right now. So do you think that the Uttar Pradesh government Yes. will implement the extension program? Actually, my extension was to be given just after 30th September. But till now, Uttar Pradesh government has not done any such kind of work. But yes, when I met the Technical Education Minister Shri Jitin Prasad sir, so he was telling that I'll give you extension. But till now, they have not given any extension. So that's why यहाँ पर आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, हम सभी लोग अपने घर परिवार से दूर आकर यहाँ पर कई दिनों से लखनऊ में बैठे हुए हैं, क्योंकि देर तो हो ही रही है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे साथ वैसे लोग जो बिहार, उत्तराखंड, झारखंड इन जगहों में नौकरी लिए थे, इसी प्रोजेक्ट के तहत, एक ही चयन प्रक्रिया के तहत, बस वहाँ पर हमें चॉइस डालना था कि हमें किस स्टेट के कॉलेज में जाना है।
तो जो लोग बिहार झारखंड में लिए वो लोग तो अभी नौकरी में हैं, वो लोग अभी सर्विस में हैं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो नौकरी लिए हैं, हम लोग पहले इसको एक अपना सौभाग्य समझते थे कि हम यहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में काम करने का मौका मिला है। हम जो उत्तर प्रदेश श्री राम की जन्मभूमि है, यहाँ पर कार्य करने का मौका मिला है, हम लोग उत्तर प्रदेश में बने रहेंगे। लेकिन आज अगर ये हमारी नौकरी नहीं एक्सटेंशन मिल पाती है, हमें सेवा विस्तार नहीं मिल पाता है, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश में कार्य करना अपने आप को दुर्भाग्य समझेंगे। वैसे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से हूँ। कोई यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है जो फैमिली उत्तर प्रदेशी से बिलोंग करता हो? आपका नाम? मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी। तो आप यहीं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते जी हैं? हाँ, आजमगढ़ यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ और इस टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत मैं KNIT सुल्तानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत था। प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से डिज़ाइन था कि 3 years it will be funded by the central government of India, and after that, because you know there is a lot of problems of litigation and all, so all the state has asked to central to give them some faculties to maintain the faculty student ratio, that is known as FSR ratio. So total 1554 faculty has been recruited. Out of that 141 faculties have been recruited in Uttar Pradesh. Project was designed in such a way that there was MOU, Memorandum of Understanding, between center and state, that after 3 years they will be either retained from the government of Uttar Pradesh or absorbed. So, you know, after 30th September, we all have become jobless. We did protest of around 65 days in front of the Shastri Bhavan. The result of that protest is that, excluding the government of Uttar Pradesh, all the government has taken the initiative. They have given 6-month extension to all the techie faculties, with the condition that within this 6 months they will make a concrete sustainability plan for their absorption. And this government of Uttar Pradesh is very insensitive. You know, you must have seen that many all the youth are moving here and there for their employment, but this is not the matter of unemployment. This is the matter of insensitiveness of the government. This is the matter of betrayal of the government, which is not fulfilling their promise of the absorption or sustainability. So otherwise, why they would have done this memorandum of understanding between center and state? And you know, these peoples are not the jobless before 3 years. We all were working somewhere. I also working in a London-based MNC as a design engineer. But this project was a dream project of government of India, and then Education Minister's Honorable Prakash Javadekar itself has announced in the Sansad Bhavan that this is a dream project of Honorable Narendra Modi, and we have sent well qualified 1554 faculties in 12 focus states, who is academically weak state of India, to improve the fast track education. You know, there is a NB accreditation, National Board of Accreditation, is one of the benchmark in the quality of technical educations. All the college where we were working during these 3 years, they got accreditation from the National Board of Accreditations. There were some DLI of this project, disbursement linked indicators. We have not only achieved those indicators, but we have exceeded those indicators. And this fact I am not telling from my side. All the monitoring agency of government of India, Niti Aayog, steering committee of India, they all have said that techie faculty have done a tremendous role, and they have not only met the objective of project, but they have exceeded the objective of project. So there should be some amicable solution for them. But I am very sorry to say that the government of Uttar Pradesh is very insensitive in terms of the quality of education. They have nothing to do with the quality of education. You know, after 30th September, repeatedly 7 times, I myself, along with some of my fellow, met 7 times with Honorable Technical Education Minister, Honorable Jitin Prasad, and 2 times to Honorable Higher Education Minister Sri Dinesh Sharma. They were giving the word that yes, things are going on, something will happen, and we are looking after that. But finally, what we got, that we are not getting any extension. So
तो ये बहुत ही दुखद बात है कि टेक्निकल एजुकेशन जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम को जब हम 3 साल कॉलेज में पढ़ाते थे, हमारे स्टूडेंट, जिससे लाखों स्टूडेंट प्रभावित होंगे, हमारे स्टूडेंट हमको रोल मॉडल मानते हैं कि सर हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा हम IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास जाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर बन गए, लेकिन हमारा भविष्य अभी सुरक्षित नहीं रहा। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और हम लोग सरकार की गलत नीतियों में फंस के आज ये हाल हुआ कि 3 साल पहले सब जॉब करते थे, उसमें इस प्रोजेक्ट में उन्हें सस्टेनेबिलिटी दिखी कि आगे जो है एक गजटेड पोस्ट दी जा रही, सबको 75,000 सैलरी दी जा रही है। कुछ लोग तो लाखों सैलरी कमा रहे थे, छोड़ के चले आए इसमें कि हम घर के पास के किसी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, हम रिसर्च करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ाना लेक्चरार का काम होता है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं रिसर्च करना, जो देश के कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देना, जो भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, कंसल्टेंसी वर्क्स करना। साल भर में 50-50 लाख के हम लोग कंसल्टेंसी वर्क करके उन संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की कोशिश किए हैं। इस प्रोजेक्ट के दौरान 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, हमने 50-50 लाख की मशीनें मंगवाई हैं, जिन्हें चलाने का एक्सपर्टीज हमारे पास है। राज्य सरकार के द्वारा तय किए हुए प्रोफेसरों को पहले नहीं चलाने का वहाँ कोई एक्सपर्टीज था। हम ये सारे IITian यूथ्स को ये सब ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस पे उदासीन है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मिल नहीं रहे हैं। आज हमारे यहाँ नंबर आप कम देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये मुद्दा नहीं है। हमारे मुद्दा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रहे हैं, ये बेरोजगारी का बिल्कुल मुद्दा नहीं है। सरकार के ट्रैप में लोग फंस के ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं कि अभी सारे लोग एकाएक, समझो कि एक शिक्षक जिसके घर में सेलिब्रेशन मना था कि हमारा लड़का असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया और एक प्राउड फील हो रहा था, आज उन्हीं पेरेंट्स को ये लग रहा है कि अरे एकाएक एकदम कैसे सरकार की उदासीनता की वजह से शिकार हो गए। और सबसे बड़ी बात, जब 1554 असिस्टेंट प्रोफेसर्स विभिन्न राज्यों में सेलेक्ट हुए तो उत्तर प्रदेश वाले ठगा महसूस कर रहे हैं कि जब हम सभी लोग एक रिगरस ओपन सिलेक्शन प्रोसेस से, जो कि 20 NITs को नोडल सेंटर बना के ये प्रोसेस हुआ था, उसके तहत 12 राज्यों में हम पढ़ा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश वाले ठगा महसूस कर रहे हैं कि काश हमने उत्तर प्रदेश नहीं चुना होता तो हमारी नौकरी आज नहीं जाती। Okay, so ironically you're saying that Uttar Pradesh is now Uttar Pradesh, and there is a matter of political will. Yes, they have ruined the career of 141 IITian and IITians. You know, IITian and IITians are it's like it's a stigma. It's a stigma on the employment of IITs as well, because IITs is known as institutions of eminence, institutions of national importance. And what the hell you are doing that you are taking the people from the institutions of, you can't do this use and throw policy at least with IITian. Okay, so basically you are saying that they have hired you, now they have fired you. Yes. Like a corporate organization do, hiring and firing. Yeah. Previously you told me that you were working in some London-based MNC. Yeah, I have worked I got campus placement from IIT Kharagpur. I work in a London-based MNC, multinational company, WS Atkins, as a highway design engineer. My role was to design a road in the vicinity of London, University of Manchester and Warrington and all. From there I came here because I thought that I'll take care of my home also, because I belongs to Azamgarh UP. So I thought it's okay, it is also a government job and at least I'll get a cabin, The people are sitting here. When we got appointed, we know that we have to do research, we have to take the classes, but we did not know that we have to do this dharna also. And if suppose Yogi Adityanath says about brain drain, then how you will? Why brain drain will not happen? Because if you will make such a pathetic conditions to these IITians, we don't have any experience for dharna, any protest and all. This is, you can think either it may be protest or request, whatever you can say. But it's very pathetic situation that you are bringing the top-notch educationists on the road. Young minds and the most influential one are doing dharnas on the road. So we are not only 1554 faculties, and we are not only 1554 parivar.
there are lakhs of students who will affect after the termination of all of us. And I'm telling to the योगी आदित्यनाथ कि आप हमें टेम्परेरली बेरोजगार तो कर सकते हो, आपकी गलत नीतियों में फंस के हम बेरोजगार हो सकते हैं, बट हम IITian बेकार नहीं हो सकते. Yeah, thank you so much, gentlemen. You think that Adityanath has means such a ironical government that they blame? I met with the Honorable CM Yogi Adityanath in December 2020. Just me and you It's a are formal sitting, meeting. at his Awas Kalidas Margs, and we discussed the issue. My issue is not. It is well known to all of the whole country. Okay, so I talked with him, and that time he said that okay, he will think of it and he will make some sustainability plan. But after that, I don't know what has happened, that he's not even willing to meet us, and we have been trying from last many months. And if suppose Yogi Adityanath government will decline Yeah. and they will repeat the course of 5 years again in 2020. So this is learning for all of us, that we should not stuck in such type of trap, because it is Yogi Adityanath government, and we should not believe upon them unless and until we are very much permanent. Okay, do you have gone to any ministers in the center? In the center, I told you we did 65 days protest, and we met Honorable Technical Education Minister of Central Government, Dharmendra Pradhan, thrice, more than thrice I think. And we met Honorable Defense Minister Rajnath Singh twice, and we have given Gyapan to the PMO also. And we followed all the track which we should follow as a requester, as a protesters. Around 10,000 emails we sent to PMO. 10,000 emails? Around 10,000 email we sent to PMO. Around 1,000 postcard we have given to the box of the PMO South Block. और कम से कम 200 से ज़्यादा ऐसे पत्र है जिसपे हमारा उनसे रिसीविंग के बाद हमें मिला. तो ये लोग इस मामले को ना जानने का एक नज़रअंदाज कर रहे हैं. मामले का ज्ञात हमें लग रहा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को है. जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उस समय तो सीना चौड़ा करके संसद में बोला कि हमने 1500 IITian NITian को रूरल क्षेत्र के एकेडमिकली वीक कॉलेज में भेजा, बट ये जब टर्मिनेट किए उस समय मीडिया का कोई कवरेज नहीं आया कि हमने इनको बेरोजगार भी कर दिया. आपने रूरल एम्पावरमेंट की बात की. अगर सपोज आप इस समय एक्टिव सर्विस में होते तो what was the micro change and the macro change which was coming in that rural Yes, empowerment? so you know that सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्हें केबिन में बैठ के रिसर्च करना था, क्लासेज लेनी थी, आज उन्हें सड़कों पे बैठ के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है. And you talked about micro level change and macro level change. So you know there is a national education policy, okay, implemented by central government, but all the state government is following. Same they could have done with us also, that central government has recruited and they could have placed us on a permanent basis at state government also. The changes which took place like in national education policy, what we are doing, we are shifting from input based education to the output based education. We are increasing the employability skill, we are increasing the entrepreneurship. All these were the objective of this project, and all the programs got accredited through NBA during our time. All the graduates got the training of the GATE classes free of cost. Entrepreneurship skills has been increased, and these are the data of Niti Aayog and the project closure reports. So we were giving them the industry readiness to the graduate engineer. We are giving all the BTech graduate to the level so that they can get the job in the industry. Because you know what used to happen earlier, that just teacher were going to the class and they were taking the lectures aimlessly, without any aim, like what would be the outcome of the course, what would be the program outcome, what would be the program educational outcome. But during 3 years, we made them in such a way that they can get any corporate job.
But unfortunately, you are now jobless. Yes, they used us, and there is no policy now. I am giving you two options. If suppose you are in the job, and if suppose the government declines, the government changes and still declines. For example, in 2022, maybe the opposition, which is currently opposition, may win the power in the role of favor, and they also decline the same. Then what will be your pathway? Well, actually, you know that we are the educator, we are the best brain from IIT. So improvement quality is in our genes. We are trying to improve the quality of educations. We are trying to improve the quality of society. We are trying to improve the socio-economic cultures of the society, but not at the cost of our own livelihood. So at least to improving all these things, we need ये सस्टेनेबल जॉब, बिकॉज यू नो अगर हम भूखे होंगे तो हम दुनिया के बारे में कैसे सोच पाएंगे. ठीक है, हम 3 सालों में रिसर्च करते थे. हमारा अभी का जो काम है, हम सुबह 9 बजे उठते हैं और यहाँ धरने पे बैठ जाते हैं और सरकार से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते थे. पहले भी हम 9 बजे ही ऑफिस जाते थे, बट 1 घंटे लेक्चर्स लेते थे, फिर अपने अपने चैम्बर्स में जाते थे, वहाँ पे रिसर्च करते थे, पब्लिकेशंस करते थे. हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स जर्नल्स में हमारा पब्लिकेशंस होता था और हम कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रदान करते थे. बट सरकार को इस टैलेंट से उन्हें ज़रा भी मतलब नहीं है, और इसका कारण भी मैं बता दूं. इसमें माननीय मंत्री से 7 बार के मुलाकात में मुझे पता चला कि मंत्री जी की थोड़ी सी मंशा है, बट टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी मंशा नहीं है. और मंशा इसलिए नहीं है कि यू नो जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब स्पेशली यूपी में निकलती है तो उसमें बहुत लोकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है. लोकल इन्फ्लुएंस डायरेक्टर्स का, वाइस चांसलर्स का, ठीक है. और आप देख लीजिए तो उनकी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए जो कि रेगुलर पोस्ट पे है. मैं ये आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक बात बता रहा हूँ. और जितने ये 141 IITian आए थे, ठीक है, हमसे कभी कभी हमारे कॉलेज के जो परमानेंट कलीग हैं वो भी खुश नहीं रहते थे, क्योंकि हमने वहाँ गया 3 साल एकदम IIT वाला दिनचर्या अपनाया. जैसे IITs में रात 10 बजे लैब में हम सो जाते थे, AC चला के अपना काम करते थे. तो उन्हें एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत थी. कहीं ना कहीं वो भी उनका अफेक्ट हुआ कि अरे यार, अगर 5 परमानेंट प्रोफेसर्स कहीं पे हैं और 8 लोग टेक्यूब के गए हुए हैं, तो उन्हें एक दिक्कत लगती थी कि ये सब काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं. तो एक तरीके का हाईलाइट हो रहा है चीज़ें. तो ये बहुत सारे लोकल इश्यूज़ हैं जो कि अगर आप कभी तहकीकात करें, अंदर तक जाएं, तो आपको चीज़ें, सिस्टम का पता चलेगा. बट हम आलोचना यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम बस यही कह रहे हैं कि आप हमारे बारे में सोचें और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन दें. क्योंकि किसी को आप पहले एवरेस्ट पे चढ़ा रहे हैं और एकाएक नीचे खाई में फटक दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है. और अगर इतने IITian NITians को, जो कि इतना वेल क्वालिफाइड है, इतना सारा काम किया, आप कह रहे हो कि आप यूजफुल भी रहे हो, आपने सारी जो भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव थे उसको मीट भी किया. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने किस लिए कर ली थी? आप ये बता देते हैं हमें कि जो है 3 साल के बाद तुम्हें भगा देंगे और आपके लिए हमें कोई प्लान नहीं है. तो कम से कम जो वेल सेटल्ड थे वो तो ना आते इस जॉब में. Last message to the government. गवर्नमेंट को लास्ट मैसेज ये है कि सरकार अगर शिक्षा के प्रति इतना उदासीन रहेगी और IITian NITian जैसे लोगों को हायर करके फायर करेगी, तो हमारा भविष्य तो ख़राब होगा ही. हमारे साथ जो लाखों स्टूडेंट जुड़े हैं, जो कि रोज़ मैसेज कर रहे हैं सर कब आ रहे हैं क्लास लेने, यहाँ क्लासेज नहीं चल रही हैं, उनका भविष्य ख़राब होगा. और हमारा और लाखों स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हैं उन्हीं का नहीं होगा. ये एक आप उदाहरण सेट कर रहे हैं कि बेटा IIT में जाने के बाद भी धरना देना पड़ता है. तो कृपया करके ऐसा ना करें और इस मैटर को संवेदनशीलता से लें. और ज़रूरत हो तो आप हमसे मुलाकात करें, एक टेबल पे थोड़ा बात करें, जिससे कि कुछ सोल्यूशन निकल सके. So you are saying that there is a refutation between a dialogue and discussion right now by the government. A last message to the youth who will be voting first time. यूथ के लिए यही है, वोट करने के लिए यूथ के लिए यही है कि वो अपने प्रतिनिधि को सोच समझ के चुनाव करें. और चूँकि ये थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, हम एक IIT से बिलोंग करते हैं, तो इसकी डिबेट कभी और कर लेंगे. Thank you so much for joining. I hope that you will get your job very soon and you will finish your dharna. And the young and the most influential brains of the IITs and IITs
will help the rural sector to get the employability criteria on the world platform. Yes, of course. Thank you Thank so you for much. covering us. कैमरामैन नक्किस के साथ अडिक खन्ना, BCC न्यूज़, इको गार्डन लखनऊ.